let's cut across to this piece of tragic news which has come in, where several coaches of 12506 North East Express derailed. And the railway station in Buxar was the nearest one where this accident happened last night. 4 deaths have been confirmed. 80 to 90 people have been injured so far. Union Minister of Railways Ashwini Vaishnav has said that the evacuation and rescue operations are complete and all coaches have been checked. 10 lakh rupees compensation has been announced for the kith and kin of those who lost their life and 50,000 for injured. Investigation committee has also been formed. We're getting some more news about what the preliminary investigation really says. Sources inform CNN News 18 as the investigation is underway. The primary concern of railways, the loud sound. As per officials, both the loco pilot and the gateman spoke of a sound that they heard before the derailment happened. This suggests a possibility of an external factor or a possible sabotage. The incident occurred after 2 separate incidents at different locations where objects were placed on the tracks, and both cases accidents were averted. Akash is joining us on the broadcast to give us more details. Akash, investigation is underway. The final conclusion, of course, is awaited, but preliminary details, what are they saying to us? We had a word with several railway officers, in fact, the officers on ground, and they are suggesting about the loud sound. In fact, officers are saying that the loco pilot, the train's loco pilot, and also the gateman, who was deployed at a level crossing, both of them are talking about this particular sound that was heard just before the derailment. Now, it is important to note that, before this particular accident, we had incidents in Rajasthan and also in Pune where, several stones and in fact boulders were capped on track. The real intention of someone who is, placing these objects on track, because this can only lead to an accident. But yes, in fact, in those cases, we have investigation going on. But after those cases, having cases in the backdrop and then the current, accident, railway officers are investigating this particular case from that particular angle as well, that some outside object or some outside, some external thing can play an important role in accidents like that. And this is the reason why, in fact, officers who are deployed there, officers who are investigating as of now, are keeping this particular thing in mind. Also, it is important to note that Railways has announced compensation for those who have lost their life in this particular incident, and also those who are injured. As of now, 4 is the figure. We are learning that 4 people basically died in this particular incident. In fact, 30 passengers are injured as of now. Thank you, Akash, for getting us all those details on that story. My colleague sends us this ground report. Let's have a look at this report by Saurabh Rathod. Major accident took place yesterday night at around 9:53 p.m. when North East Express 12506 derailed at Raghunathpur railway station here in Bihar. The 23 coaches train derailed completely and at least 6 coaches overturned and fell on track. Now the sad part is that 4 persons in this accident died and more than 80 are injured. They have been shifted to the local PHC and different hospitals in Ara and Buxar. Some of them who are critically injured have been taken to Patna, and the critical patients have been taken care of at Patna Medical College and Hospital. Now the rescue operation has been going on since night, and NDRF, SDRF, police officials and railway officials are conducting the rescue operations. And now the biggest challenge here is to clear the tracks, because already at least more than half a dozen trains have been cancelled, and and several trains have been diverted from different routes. And the administration must answer as to what led to this accident, because this is the second accident just after 4 months when the Balasore train accident took place. लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं और पीएमसीएच में भी लोगों को भेजा जा रहा है। मैंने अस्पताल के अंदर सारे हमने तहकीकात किया है, सभी अस्पतालों में लोग कुशल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, सब प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था हो रही है। कितने लोग अभी तक इंजर्ड हैं, क्या कुछ फिगर मिला है? मेजर इंजर्ड 8 लोग एम्स में हैं, और वही मतलब सभी जगहों पर जो
22-23 लोग वहां हैं बाहर में, कुछ आरा हॉस्पिटल में, लेकिन सभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि खतरे से खाली है। तो फिर से एक सवाल खड़ा होता है सेफ्टी को लेके, बालासोर के बाद फिर ये 4 महीने में दूसरा एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, घटना घटी है, ये दुखद है, इसकी जांच हो रही है। जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए क्या क्या हो रहा है? ये दुखद है, उनके हर प्रकार की मुआवजा जो रेल का है वो देंगे, हर प्रकार की व्यवस्था हो रही है। Mr. Pathak, please tell us this tragic incident that happened last night. Yesterday, maybe at 9 to 9:45 p.m., we heard a hard noise, and the electricity has gone. And after that, the local villagers has escaped us from the train. So the locals here played a very vital role. Yeah. We are so much thankful for them. 4 months back also in Balasore we saw so many people died, and now after 4 months this incident happened. What would you like to tell the government about it? The railways The government should take necessary actions for that. and That's more all. safety measures. Should take safety measures also. पीछे डब्बा में थे और जब एक्सीडेंट हुआ तो इस टाइप का प्रदर्शित हुआ, जैसे लगा कि भूकंप टाइप से आ गया और गाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जाने लगी। तो हमारे साथ जो बैठे लोग थे, जब झटका लगा तो लोग इधर से उधर लड़ना शुरू कर दिए। हम तो ऊपर सोए हुए थे, अब अचानक कंपन टाइप का होने लगा और धीरे धीरे मतलब ट्रेन लगा कि मतलब एक तरफा गिरने लगा। उसके बाद मैं भी गिरा ऊपर से, ऊपर में सोया था, गिरा नीचे धड़ाम से ना गिरा, फिर ट्रेन रुकी। ट्रेन शायद पटरी से उतर गई, फिर देखा उतर के तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे कैजुअलिटीज भी सुनने में आया है, चोट भी बहुत लोगों को लगा। तुरंत दुर्घटना हुआ है, उसके लिए तो समूचा जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से लेकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए, हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे, और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम हालांकि है तो उनका घा बनवे, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है, रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक तरह से हम देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है, सहयोग। कामाख्या जा रही ट्रेन जो है बक्सर के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और हमारी सारी अधिकारियों से बातचीत हुई है, चाहे दोनों जिला के डीएम हों, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी हों, आपदा विभाग के अधिकारी हों, सारे हॉस्पिटल से लेके चाहे बक्सर का हो, आरा का हो या पटना के आईजीएमएस हो या एम्स हो, सभी जगह जो है अलर्ट पे जारी कर दिया गया है, और मोबिलाइज जो है चाहे सिक्योरिटी फोर्स जो हो मदद के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी को जो है लगा दिया गया है। हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों की जान को सुरक्षा करें और लोगों को बचाना और इलाज कराना, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द जो है निकाला जाए। इस कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं और एक एक नजर हम लोगों के पास है, और हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रिलीज कर दिया गया है।